Hello, dear learners. How are you all? Your learning buddy Aprajita is here with your English textbook, Language Odyssey, Class 8 by Knowledge Series, Amit Publishing House. So, children, what are we going to do today? A new chapter. And the chapter is chapter number 5. At the station, I met life. अब स्टेशन पे लाइफ कैसे मिला? So let's start the chapter here and come to know about this. So we started here. A platform scene is there. Station का platform है ये और इसमें बहुत सारे लोग दिख रहे हैं. Different people doing different things. And about the story, what's there in the story? A short story of a girl who waits for her train, and her conversation with a stranger shows her the way to her life. So let's read this कि एक छोटी सी बच्ची जो कि स्टेशन पे ट्रेन का वेट कर रही है, उसका कॉन्वर्सेशन एक किसी स्ट्रेंजर के साथ जिसे वो नहीं जानती. स्ट्रेंजर कौन होता है? जिसे आप नहीं जानते पहचानते. तो उसके साथ कॉन्वर्सेशन में उसको कैसे अपना लाइफ का वे मिलता है, द वे ऑफ लाइफ, वो स्ट्रेंजर कैसे दिखाता है उसको. लेट्स रीड इन दिस चैप्टर. द फेयरवेल पार्टी my colleagues at work gave me just extended a rather too long than what I had expected. Farewell means goodbye party. Okay, कहीं से आप छोड़ के जा रहे हैं तो वहां से आपको farewell party मिलती है. When I looked at the time, to my horror, my train to Bangalore or Bengaluru, like we call it now, Bengaluru, was to leave in half an hour's time. अब farewell party थी किसी जो ऑथर है उसकी. अब जब टाइम देखा तो आधे घंटे में ट्रेन छूटने वाली थी बेंगलुरु. उनकी बेंगलुरु के लिए जो ट्रेन थी वो हाफ एन आवर में जाने वाली. I picked my luggage and rushed to the station, carrying the heavy bags on both my shoulders, and walking past the maddening crowd was in itself an exercise. अब क्योंकि लेट हो गया था तो 2 हेवी बैग्स उठाए और उठा के कहाँ भागी? स्टेशन की तरफ भागी. तो वही अपने आप में एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी क्योंकि भीड़ इतनी थी. उस भीड़ को पार करके उन हेवी बैग्स के साथ पहुंचना, it was itself an exercise. When I reached the platform, it was all so silent and the train wasn't there. अब जब मैं प्लेटफॉर्म पहुंची तो वहां सब कुछ शांत था, ट्रेन नहीं. God, how could I miss the train? I said. अब she thought, मैंने तो ट्रेन मिस कर दी, ऐसे कैसे मैं ट्रेन मिस कर सकती हूँ. Then a voice at the PA system announced. अब आप स्टेशन पे जब जाते हैं तो वहाँ अनाउंसमेंट्स होती रहती है ना, तो ऐसा ही एक अनाउंसमेंट उसको सुनाई. The train 2341 to Bangalore is running an hour late due to the technical snag. We apologize for the delay. अब उस अनाउंसमेंट में क्या सुनाई दिया? बैंगलोर जाने वाली जो ट्रेन थी जिसका नंबर 2341 था वो 1 आवर लेट थी किसी टेक्निकल इशू की वजह से. I smiled. I took a cup of coffee and sat at the nearby clean bench. अब उसको तो उसने जब सुना वो अनाउंसमेंट सुना, then she smiled. ओके, तो मैंने अपनी ट्रेन मिस नहीं की इसका मतलब. अब उसने कॉफी का कप लिया, कॉफी लिया और एक क्लीन बेंच पे बैठ. That girl. Sipping the coffee, I took my book out of my purse and started reading The Alchemist. एक बुक निकाली उसने और वो रीड करने लगी. By Paulo Coelho. The story of a man who follows his dreams and eventually realizes them. अब जो बुक निकाल के पढ़ रही थी वो, उसमें एक आदमी की स्टोरी थी वो जिसने अपने ड्रीम्स को फॉलो किए और उसको रियलाइज किया थी. Oh, that's a wonderful book you are reading, came in a woman's voice.
एक किसी लेडी की आवाज आए कि तुम बहुत अच्छी बुक पढ़ रही हो. I turned around to see who it was. A lady in her 60s, dressed elegantly in white salwar suit, sitting on the bench next to me. I hadn't realized when she had come and sat by. अब उस गर्ल ने टर्न होकर देखा कि कौन है, किसने बोला ये. तो उसको एक लेडी दिखी अपने पास बैठी हुई जो कि 60s में उनकी एज थी और उन्होंने एक बड़ी एलिगेंट सा एक सलवार सूट व्हाइट कलर का पहना हुआ था. शी कुडंट रियलाइज कि कब आके वो उसके पास बैठ गई. Yes, it is one of my favorites, I said. अब that girl said कि हाँ ये मेरी बहुत फेवरेट बुक. You are going to Bangalore too, I asked. अब उस गर्ल ने उस वुमन से पूछा कि आप भी बैंगलोर जा रही हैं. Yes, you are going there for work, she said, arranging her bag by her side. अब उस लेडी ने भी पूछा कि क्या तुम भी जा रही हो बैंगलोर. तो she said, उसने अरेंज करते हुए बैग पूछा. No, for marriage, family wedding. ओके, अब उसने पूछा फॉर मैरिज, तो कहते फैमिली वेडिंग. तो दैट लेडी सेड फैमिली वेडिंग है कोई. नो, इट्स माय वेडिंग, माय फैमिली स्टेज देयर. अब उस गर्ल ने बोला कि नहीं मेरी वेडिंग है, मेरी शादी है और मेरी फैमिली बैंगलोर में है. कंग्रेचुलेशंस, शी सेड स्माइलिंग. अब उस वुमन ने, ओल्ड वुमन ने कंग्रेचुलेशंस बोला उस गर्ल को. Thank you. I'm working here as a designer and going back now. मैं यहाँ पे as a designer work करती हूँ और अभी मैं वापस बैंगलोर जा रही हूँ. That's nice, she said, sipping water. अब उस old woman ने पानी को sip करते हुए बोला कि ये तो बहुत अच्छी बात है. So you would continue working? This lady asked the girl कि अब इसका मतलब तुम कंटिन्यू करोगे अपनी वर्क को, अपना जो जॉब कर रही हो. Well, no. My fiancé doesn't appreciate my designing work and wants me to raise his family, and that's what my father also wants. अब इस गर्ल ने बोला कि नहीं, my fiancé means जिससे मेरी शादी होने वाली है, उसको पसंद नहीं है कि मैं ये डिजाइनर का जॉब करूं. he wants कि मैं घर में ही रहकर फैमिली की देखूं, and मेरे फादर भी यही चाहते. He had agreed after my repeated requests to complete my completing the designing course and send me here to work for this company only on this condition that I get married where he wants after I finish this assignment. Up, that girl is telling to this woman that मेरे फादर ने मेरा कोर्स कंप्लीट कराया डिजाइनिंग का इसी शर्त पे कि मैं यहाँ आके जॉब करूँ और फिर जैसे ही मेरा ये असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए मैं उनकी पसंद की जगह पे शादी. Okay, an arranged match, so you agreed? Well, yes, I said, closing the book in my hand. अब उस गर्ल ने, उस लेडी ने बोला okay, तो ये arranged marriage है तुम्हारी. And the girl said yes. What after marriage? She asked. This lady asked, what after marriage? क्या करोगी after marriage? I don't know. I really don't know. Sounds nice, isn't it? Saying sarcastically. Now, अब एक टॉन्ट जैसे होता है, टॉन्टिंग वे में हंसते हुए that lady said, अच्छा तो तुम्हें नहीं पता. Wow, very good. बहुत अच्छी बात है, तुम्हें नहीं पता. Nice or not, I have to do it. But that's how Dad wants it. Now the girl said कि अच्छा हो ना हो, लेकिन जैसा मेरे डैड चाहते हैं मैं वैसा ही करूँ. And how do you want it? She said. उस लेडी ने बोला कि तुम कैसा चाहती हो. उस गर्ल से तुम कैसा चाहती हो ये बताओ. What? You heard me. Look at 40 years from now. You are a wife, a mother, and every day you start trying to improve, trying that you can be so perfect, trying to make everyone happy. But when you walk past a mirror, stop for once. You'll find someone standing there looking back at you and saying you,
you forgot me. अब उस लेडी ने बोला कि अब जब 40 इयर्स गुजर जाएंगे, आप एज अ वाइफ, एज अ मदर, डेली आप अपनी फैमिली के लिए वर्क करोगे, उनकी देखभाल करोगी, परफेक्शन लाने के लिए अपने अंदर कुछ भी करोगी, बहुत मेहनत करोगी, एंड व्हेन जब आप मिरर के सामने से निकलोगी तो कोई एक खड़ा हुआ दिखेगा आपको पीछे और वो पूछेगा कि तुम मुझे भूल गई. आई डिडंट गेट हर. अब उस लड़की को ना कुछ समझ में नहीं आया उस वो लेडी की बात. कैन यू गेस माई एज? अब उस लेडी ने उस गर्ल से पूछा, क्या तुम मेरी एज बता सकती हो? सोचने लगी. 63. आई रिप्लाइड. यू आर नियर. आई एम 65. उस लेडी ने बोला, बिल्कुल पास ही हो तुम, मैंने ठीक ठाक ही बताई एज. मेरी एज 65 है. बट आई कैन ओनली से आई हैव ओनली लिव्ड फॉर 47 years. Now that woman says कि मेरी एज तो 65 की है, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि मैंने जो जिंदगी जी है वो मेरे केवल 47 years जी है. How? The first 18 was not my life. She continued. My life was worse than yours. That woman says कि पहले जो 18 years थे पहले के मेरे, वो तो मेरे थे ही नहीं. That was not my life. My life was worse than yours. Born in a staunch Brahmin family. Now, कहती है मेरी लाइफ तुमसे भी ज्यादा worse थी. She is telling her story to that girl. कि मैं ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुई थी. I knew my love for dance was inseparable. My parents, even though aware of it, would never raise the topic before me. मैं डांस का जो मेरा पैशन था, जो लव था, that was inseparable. लेकिन मेरे पेरेंट्स कभी भी मेरे सामने वो टॉपिक नहीं उठाते. I would practice dancing at my friend's place. Whenever I got chance, I started participating in community shows. कहते हैं मैं उस वुमन कहती है, that lady tells कि मुझे जब डांस करना होता था मैं अपने फ्रेंड के घर जाके डांस की प्रैक्टिस करती थी और धीरे धीरे मैंने डांस शोज में भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया. In one of these shows, that पंडित राम जी spotted me. एक ऐसे ही किसी शो में पंडित राम जी ने मुझे देखा. He offered me a place in his troupe where I could learn and perform. पंडित राम जी ने उनको देख के, उनका डांस देख के उनको अपने ट्रूप में आने का इन्विटेशन दिया, जहाँ की वो सीख भी सकती थी और डांस भी कर सकती. He even spoke to my dad, but he was only humiliated in return. Humiliation मिला उन्होंने उनके डैड से भी बात की, लेकिन उनको कुछ हासिल नहीं हुआ. Humiliate ही हुए. Before leaving, he saw me standing by the door with tears in my eyes. He just said one line. You have wings. Use them to fly. Fly to lead, not to be led. Now, जब पंडित राम जी जा रहे थे उनके फादर से बात करके, तो उन्होंने देखा पंडित राम जी ने कि मैं खड़ी थी, मेरे आंखों में आंसू थे, और उन्होंने एक ही लाइन बोली मुझे कि तुम्हारे पास पंख है, तुम उड़ो, उड़ो लीड करने के लिए, जिससे लोग तुम्हारे पीछे आए, तुम किसी के पीछे ना जाओ. That very moment, I got my call. I left home and joined पंडित जी. अब That moment I got my call. उन्होंने क्या किया? उन्होंने घर छोड़ दिया, लेडी जो बता रही है स्टोरी, और वो पंडित जी के साथ ज्वाइन कर लिया. Slowly my work was appreciated and fame and success came my way. I married the man who respected me and my work. I won't say things are easy, but my belief was just too strong. The lady said कि धीरे धीरे मुझे सक्सेस मिलती चली गई, लोग मेरा वर्क अप्रिशिएट करने लगे, मेरे डांस को अप्रिशिएट करने लगे. फिर मैंने ऐसे इंसान से मैरिज किया जिसने कि मेरे वर्क की रिस्पेक्ट करता. आई नो, मैंने कहा कि मुझे पता है कि चीजें आसान नहीं होती हैं, बट आपका बिलीफ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. आई जस्ट थॉट आई कांट लेट हर इन्फ्लुएंस मी. अब उस गर्ल ने सोचा कि मैं इन्फ्लुएंस नहीं होंगी इनकी बातों से. But I love my father, I said.
So if you marry where he wants, it's just your own way of showing that you love him, isn't it? ने कहा, उस लेडी ने बोला कि ठीक है तुम अपने फादर से लव करती हो, लेकिन बस यही तरीका कि जहां वो चाहेंगे तुम्हारी मैरिज कर देंगे, यही एक तरीका है तुम्हारा लव शो करने. She said no. Love is a bond to be felt, understood. If you love someone and it's true, you don't have to show it because you know about its existence and your God knows about it. Let it stay till there. Till there. Now, children, what that lady said. If you love your father, love, what is love? Love is a bond, एक bonding होती है जो कि फील किया जा सकता है और समझा जा सकता है. अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये तो एग्जिस्टेंस है जिसके बारे में ऊपर वाले को ओनली गॉड नोज अबाउट इट. उस प्यार को रहने देना चाहिए मुझे. बट आई डोंट नो व्हाट टू डू. माय फैमिली इज ऑन वन साइड एंड माय ड्रीम्स आर ऑन द अदर. नाउ दिस गर्ल सेज कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी फैमिली एक साइड पे, मेरी ड्रीम्स एक तरफ. व्हाट टू डू, आई डोंट नो. हाउ मेनी टाइम्स हैव यू रेड दिस, शी सेड, टेकिंग द अल्केमिस्ट फ्रॉम माय हैंड. 5 times, I said with pride. अब उन्होंने जो बुक वो गर्ल पढ़ रही थी अल्केमिस्ट, वो उसके हाथ से ली और उन्होंने पूछा उस लेडी ने कि तुमने ये कितनी बार पढ़ी है बुक. That girl said, मैंने 5 times पढ़ी. 5 times you read it, but you didn't understand once what the author wants to convey. Soon we were interrupted by the PA system again. अब उन्होंने that lady said कि तुम 5 बार इस बुक को पढ़ चुकी हो, लेकिन आज तक नहीं समझ पाई कि ऑथर ने क्या बोला है, क्या समझाया है इस बुक में. और तभी फिर से वो PA सिस्टम जो स्टेशन पे जिसमें अनाउंसमेंट होता है वो बजता. The train 2341 to Bangalore is arriving on platform number 2. It would only stop for 10 minutes. अब उसमें अनाउंसमेंट हुआ कि जो जिस ट्रेन में उनको जाना था वो ट्रेन आने वाली थी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे. Well, our train is coming, she said, assembling her bag. Now this lady said, चलो हमारी ट्रेन आने वाली है, अब आ रही है. I could see the train slowly approaching. It surely knew its destination. Suddenly there was movement around as if everyone had just woke up from a sleep. I did wake up too. Now, जैसे ट्रेन आनी शुरू होती है ना, ट्रेन आती है, कोई ट्रेन आती है स्टेशन पे तो चारों तरफ हलचल मच जाती, लोग इधर उधर चलने फिरने लगते हैं. ऐसा ही कुछ यहाँ. As the train halted, the lady held her airbag and moved to the compartment in front. Get up, she said from there. Now, जैसे ही वो ट्रेन आई तो उस लेडी ने क्या किया, अपना एयरबैग लिया और कंपार्टमेंट की तरफ चलने लगी. और उस गर्ल से भी बोला, गेट अप. I got up, took my luggage. This time I didn't feel heavy. That girl then got up और उसने अपना लगेज उठाया. इस टाइम उसको लगेज हेवी नहीं लगा. I turned around and started walking. Hey, you are going the wrong way, she said. वो अपना लगेज उठा के वो गर्ल चलने लगी और उस लेडी ने बोला उस लड़की को कि तुम गलत डायरेक्शन में जा रही हो, गलत तरफ जा रही हो. I turned and stopped. That girl stopped. No, actually this time I am going my own way. Thank you so much and have a wonderful journey, I said smiling to her. अब क्या हुआ, ट्रेन जैसे ही आई उस लड़की ने अपना लगेज उठाया और उल्टी तरफ जाने लगी तो उस वुमन थी उसने कहा तुम गलत डायरेक्शन में जा रही हो, ट्रेन तो इधर जाएगी. तो उस लेडी दैट गर्ल सेड, उस लड़की ने बोला कि नहीं, मैं अब सही डायरेक्शन में जा रही हूँ. आपकी जर्नी बहुत अच्छी हो एंड थैंक यू सो मच. I am on my journey now. I said smiling. वो स्माइल करते हुए उस लड़की ने बोला अब मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ. I could see her smile back radiantly. Now that girl saw that वो जो लेडी थी वो भी स्माइल कर रही थी और she was very happy. Why? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब उस
वुमेन की बात, उस लेडी की बात उस लड़की के समझ में आई कि उसको अपनी लाइफ में क्या करना है. My mobile rang. It was my dad's call. I talked to him. I said, "Let me complete my course first, Papa," telling all my views. Now, जैसे ही मोबाइल बजा, उसके फादर का कॉल था. उसने अपने फादर को बोला कि पापा, लेट मी कंप्लीट माई कोर्स, पहले मुझे अपना कोर्स कंप्लीट कर देने दीजिए, और उनको सारी बातें और भी बताई. He got impressed and said, "Okay, my child, as you wish." जैसे ही उसने ये सब बातें अपने फादर को बताई, तो उसके फादर ने बोला, "Okay, as you wish, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही." I moved out of the platform, holding firmly on to my books and my dreams. और वो प्लेटफॉर्म से बाहर निकल गई. वापस कहाँ? जहाँ वो अपना वर्क छोड़ के आई थी, अपने ड्रीम्स छोड़ के आई थी. She got back there. Now, children, no more something to know. Success does not come from twitch reflexes alone. सक्सेस के लिए बहुत सारे मेहनत करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है. Then you get the success. Now, in a nutshell, what we read in this chapter, life is not always going to be roses and rainbows. हमेशा लाइफ बहुत easy नहीं होगी. Roses and rainbows means it will never be an easy life all the time. You are going to have uncomfortable moments, yes. It's what we do with those moments that is going to count and determine our destiny. हम उन कठिन परिस्थितियों का कैसे सामना करते हैं, हमारी लाइफ में जब कठिन परिस्थितियां आती हैं, उसका हम कैसे सामना करते हैं, that matters. क्योंकि easy life तो हर कोई जीता. If we are getting everything in our life, we don't have to do anything, then that's a very easy life. That easy life can be passed by everyone. The thing is, when you are uncomfortable at certain moment and you face some difficulties, उस time पे आप अपनी life को कैसे जीते हैं, that matters. We are the master of our life and mind. Yes, we have mind to think, and our life is ours. Nobody can control our life because God has given everybody the mind and the life of their own. So we should lead our life according to our sensibility, our thoughts. We should lead our life like that. So children, I hope you had a good time reading this chapter, reading this story, and learned a lot too. Now, testing time again. Take the correct options. It was all so dash at the platform. Crowded, noisy, silent, none of these. It was all silent at the platform. Ramji offered her a place in his party, troupe, band, none of these. Troupe, because troupe क्या होता है? A group of dancers. Love is a bond to be felt, understood, both A and B, none of these. Love is a bond to be felt and understood both. So both A and B. Things are not easy. They can be made easy by strong will, determination, both A and B, or none of these. Things can be made easy with strong will and determination both. So both A and B. Fine. So children, now on the basis of your understanding of the text, complete the following. Some lines have been given. Incomplete lines are there. You have to complete them. Incomplete lines को complete करना है, जैसा कि आपने chapter में भी पढ़ा. वहीं से ये lines ली गई. So, the farewell party given by the girls' colleagues extended. क्या हुआ था जब वो extend हो गई थी? Extended a rather too long than what the girl had expected. And then she picked up her luggage and rushed to the station क्योंकि वो late हो गई. Next is the train got delayed by an hour. So, she took a cup of coffee and sat at the nearby clean bench.
You have to go through the lesson again and again. बार बार इस lesson को पढ़ेंगे. Then you'll be able to find out these lines there. The woman asked the narrator to look at 40 years from now. She told her that when she will walk past a mirror, she will find someone standing there, looking back at her and saying her, "You forgot me." ऐसे ही बोला था ना उस woman ने narrator को, उस girl को. The woman was born in a staunch Brahmin family. Her love for dance was inseparable. In one of her shows, Pandit Ramji spotted her and offered a place in his troupe. This was about that lady. She said to the narrator that love is a bond to be felt and understood. If you love someone and it is true, you don't have to show it. And the last one is, hearing the story of the woman, the narrator, क्या हुआ था narrator के साथ जब story सुनी उस woman की, she found her own way to lead her life. उसको अपना life lead करने का way मिल गया था, in her own way. Here we have completed these sentences. Now answer the following questions. Why was the girl almost late for the station? Why she was late? Because her farewell party had extended very long. What type of job was the girl engaged with and why did she leave her job? That girl was a designer and she had to leave her job because her father had called her back to Bangalore to and marry to the boy whom he wanted, whom he had selected. What lesson did she learn during her conversation with the old lady at the station? During her conversation with that old lady at the station, she learned that life is to be led according to your own wish. If you have some passion, if you have some dreams, that dreams are to be fulfilled along with leading a good life. It doesn't mean that you have to leave your family or you have to leave somebody or you have to hurt somebody. No, you have to make them understand what you want to do in your life and how you want to complete your goals. What incident did the old lady narrate to convince her the moral of the story? To convince that girl and to make her understand the moral of the story, the old lady told her about her own passion for dance and how she was born in a Brahmin family, a very staunch Brahmin family where dance was not allowed, and how she went to her friend's house to do the dancing, to practice the dance, and she was selected in a troupe by Pandit Ramji, but her father didn't allow her to go with that troupe. Then she left that home and joined the troupe with Panditji, and after that, slowly and gradually, people started appreciating her work and her dance too. So, this was the lesson she gave to that girl. What incident? This was the incident about that lady. Now, what did she ultimately decide and how was the action enacted? Now, this girl ultimately, after hearing the story of that old lady, she decided to do what she wanted to, make her dreams come true. So, when the train came at the station for Bangalore, she had to go to Bangalore, but she didn't board the train. She went back, she went out of the platform, she went back to her workplace. And this was the action which she enacted there. She didn't board the train, she went back to make her dreams true. Whatever she wanted to complete her, and she told her father about her views and how she wanted to complete her course, and after that
she would marry after completing her course, after becoming something good, after achieving her goals. She would do what her father wanted. Okay, and her father also appreciated her. So, children, this was all in this chapter. Stay excited for the clamp of next video. We'll meet soon with a new chapter. Till then, bye.